So, hello students. This is going to be a special session with Shubhra Ranjan ma'am. Now, we got the results for CSE Mains 2023 and we are happy to inform that 260 plus students from our institutes have qualified the examination. Now, they have started their preparation for the interview. Also, those two students who are going to appear for 2024 examination, they are starting their prelims preparation, and therefore this is the right time to focus these students and just guide them that what should be the way forward. And we have with us none other than Shubhra Ranjan ma'am. Welcome, ma'am. Ma'am, we got the results for the mains, and there are some 260 students who from the institute who are going to give the interview. Now, what should be their focus area? That means there are a lot of things to cover. You have DAF to cover, there are current affairs, there are service related stuffs that they need to cover. Now, what is your message to them? That for interview, what should be the focus areas for the students? So first of all, I will say stay calm. In the last 2-3 days, I met many students, and what I see, lot of anxiety. So there is no need to be anxious. Stay calm. Interview personality test है, knowledge test है नहीं. Knowledge test आपका हो गया है. आपको एक एक्सपेक्टेशंस होगी इंटरव्यूअर्स को, आपको उसको फुलफिल करना है. तो पर्सनालिटी एस्पेक्ट पर भी ध्यान रखिए, करंट इश्यूज पर ध्यान दीजिए, करंट डेवलपमेंट्स पर ध्यान दीजिए. बहुत सारे रिसोर्सेस ना पढ़ें, कंसोलिडेट करें. आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि आपको हर चीज हर के बारे में पता हो. सो अपने डैफ पर ध्यान रखिए, लिमिटेड पढ़िए लेकिन समझ करके पढ़िए, बोलने की प्रैक्टिस करिए, मॉक प्रैक्टिस करिए, और ऐसी कोई भी चीज जो आपके कॉन्फिडेंस को डाउन कर रहा है उससे आप दूर रहे. दिस इज द मैसेज. Yeah, so in fact, we are organizing a session for the mock interviews, wherein the panel is having senior bureaucrats and people from the political science background, that means from the academia. So I'm sure that is going to help you. Ma'am, you rightly said that this particular last stage is just the test of the personality. The knowledge test at certain level has already been done. But this particular stage is having 275 marks in total, and of course it is going to make difference in the rank, of course. Okay, now you talked about filling the DAF in a very careful manner, not exaggerating the things, and getting updated with the current affairs. Now, what I want to ask is that those students who did not qualify for the mains, of course many such students might have met you, so what is your message for them? What should be the way forward, because the next prelims is of course coming in May. So what should be the way forward? See, once you have decided for civil services, I expect you to be rational. Or there is a need that you should be very very careful कि आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है. और इस सिलेक्शन, मतलब वो जो एक माइंडसेट है बहुत नेचुरल है जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन उससे जितनी जल्दी आप बाहर आएंगे उतना ज़्यादा बेहतर है. इवन अभी जो लोग एग्जाम्स दे रहे हैं या इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, अगेन हो सकता है उसमें कई लोगों को प्रीलिम्स फिर से देना पड़ जाए. आपकी सिचुएशन फिर भी अच्छी है कि आपको क्लैरिटी है. आप जो इंटरव्यू अगर जो प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो प्रीलिम्स पर भी ध्यान दे पाए. तो अपने बारे में जो भी पॉजिटिव चीजें हैं वो सोचिए और आगे बढ़िए, बिकॉज एवरी डे विल मैटर फ्रॉम नाउ एंड यू हैव टू बी वेरी रैशनल. देयर इज नो अदर वे. एंड वर्क अगेन, जो भी आपने पिछली बार ऐसा लगता है कि मिस्टेक्स हुई हैं तो उनको आप रिकवर करें. And just keep on working and working and working. Yes, as you rightly said that some 5 to 6 lakh students appear for the prelims, and some 14,000 qualified for mains, and now we have a group of 2,500 students. Some will qualify this final stage, some will have to return back. But those who have not qualified, again the next thing is prelims and the mains, right? Ma'am, for the students who are going to appear in the next year, and as we enter into January, and once the notification is coming in Feb, of course the prelims preparations should kick start now, especially यदि हम 2023 or 2022 का पेपर देखें. Of course one conclusion that we can draw is that we cannot take prelims for granted, and not also the qualifying paper, that is
the Yes. CSAT. Now that has probably become the most important paper, I would say now. So what should be the time frame, whether from Feb or from January itself? When should one start the preparation for prelims? I think those who are going to give for the first time, they should not delay beyond January. सो जनवरी से आप स्टार्ट करें, बिकॉज आपको कम से कम 3-4 राउंड ऑफ टोटल रिवीजन लगेंगे, तब जाकर के आपके जो क्वेश्चंस है वो वहां पर सही हो पाएंगे. बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है. जनवरी, फरवरी और मार्च, इसमें जितना भी ज़्यादा हो सकता है आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लें, पढ़ाई कर लें. मार्च ऑनवर्ड्स, मार्च अप्रैल में ज़रूरी है कि डेली 50 to 100 क्वेश्चंस किए जाएं, और उस समय करंट अफेयर्स पर फोकस करना है. अभी आप जब प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक्चुअली मेंस जीएस का भी जो कोर प्रिपरेशन है वो साथ ही साथ होता है, तो इसको यूज करें. और देयर इज नो स्कोप कि अब इससे ज़्यादा आप डिले कर पाएं. दैट इज द मोस्ट आइडियल टाइम. आपको दोनों चीजें कवर करनी है, बेसिक्स एंड करंट. जब भी लगे कि प्रायोरिटाइज किसे करना है, बेसिक्स को करिए, क्योंकि करंट भी कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड होता है. तो अभी से अगर इस तरीके से आपने अपने एक टाइम टेबल सबसे पहले बनाइए, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, अगर आपका डिफरेंट स्किल्स एग्जाम्स टेस्ट करते हैं, सिर्फ नॉलेज नहीं. टाइम मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट आप कैसे कर रहे हैं, आप खुद का किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं. तो एक आप टाइम टेबल बनाइए कि क्या क्या चीजें प्रैक्टिकली फीजिबल हैं. अगेन आप देखिए कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या क्या हैं. जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है. और ऐसा लगता है कि कुछ पोर्शंस जो बिल्कुल नहीं हमसे हो सकते हैं, उस पे ज्यादा नहीं. आप अपनी बिना स्ट्रेटजी के, it is difficult to clear the competition. You should have a strategy and you should have conviction about your strategy कि आपकी strategy सही है या नहीं है. And of course practice makes man perfect. So basically, January would be the right time to kickstart the preparation, and definitely don't delay it beyond February. Somewhere around in mid-Feb, the notification is coming, and after that, it should be the preparation of prelims. What ma'am said is that you have some important 4 pillars for your prelims preparation. You have to focus on the general studies part, the static part. You have to focus on the current affairs. You have to give focus on the previous year question and the test papers. Ma'am said that you have to solve every day some 50 or 100 questions. And then, of course, the fourth pillar is CSAT, which has become more important. Now, those who are going to appear for the next year prelims, we are going to start the QEP program. It is actually the revision of the entire syllabus, which is specific for the prelims. So it is going to start from next year. And along with that, we have also the mock test, just to supplement your preparation and make you ready for prelims. I would like to tell about the QEP program, Yes. which we conduct. So this QEP program is in the question and answer format, and we take a workbook approach, जिससे कि टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट नहीं हो, और जो भी कोर एरियाज हैं वो आपको क्लैरिटी आ जाए. और जब हम उसको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में करेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, तो नॉर्मली जहाँ पर आप गलती कर सकते हैं, वो वाली जो गलतियां हैं उससे आप बच सकते हैं. तो ये अप्रोच हमारी बहुत यूनिक अप्रोच है, विच वी हैव स्टार्टेड, एंड इट हैज रियली हेल्प द स्टूडेंट्स. सो you can take the advantage of that QEP program. Yeah, because even if you read a lot, but what everything gets cluttered in the mind, and when you approach it from like question answer format, then the concepts gets settled. Another thing that I would like to focus is that the syllabus is quite huge, especially the main syllabus. We have 9 papers. Even if you remove the 2 qualifying papers, we have 7 papers. The time is limited. Now, when you have 7 papers to cover, you have 2 papers of political science, 1 of AC, 4 of general studies. Then what becomes more important is the integrated approach. Of course, you cannot prepare in silos. That means if I am preparing for general studies history part, I will not use it for the political science. It has to be done in the integrated manner. Will you please just emphasize on this, that what is the importance of integration in this examination? देखिए, यूपीएससी का ट्रेंड बदल रहा है. आपने राइटली कहा कि सिलेबस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है,
और अगर हम क्वेश्चंस की बहुत अच्छे ढंग से एनालिसिस करें तो नेचर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मल्टी डिसिप्लिनरी हो रहे हैं। तो इसके लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच ही एक तरीका है एक ह्यूज सिलेबस को मैनेज करने के लिए। अब जहां तक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स की बात है तो आप ऑब्वियसली एक एडवांटेज में हैं। कारण ये है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो एक तरीके से सब्जेक्ट्स में भी मास्टर साइंस माना जाता है जो बहुत इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का है। तो उस सब्जेक्ट को लीवरेज करने की जरूरत है। आपको हमेशा अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को आप लीवरेज करें। अगर आप पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली है कि आपको एथिक्स में ऐसा स्कोप है कि आप बहुत अच्छे से टाइम को सेव कर सकते हैं। अगेन, जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं और ऐसे है तो अब ऐसे का ट्रेंड कैसा हो गया है, बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल हो गया है। तो ऑब्वियसली जैसा एडवांटेज आपको है वो शायद अदर सब्जेक्ट्स में ना मिले। तो आप एक साथ कई चीजों का प्रिपरेशन करें, सिलोज में प्रिपरेशन ना करें। ऑफ कोर्स GS2 जो है, और मैं तो ये कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि केवल पॉलिटिकल साइंस से आपको जनरल स्टडीज में फायदा होने वाला है, आपको जनरल स्टडीज का भी पॉलिटिकल साइंस में फायदा होने वाला है। तो आप देखिए कि क्या कॉमन एरियाज हैं किनको हम कॉमनली कर सकते हैं। आप पॉलिटिकल साइंस में ही इंडियन नेशनल मूवमेंट को इतना एनालिटिकली कर सकते हैं कि मेंस का काफी बड़ा पोर्शन आप हिस्ट्री का प्रिपेयर कर सकते हैं। आप सोशल इश्यूज, अगर हम सोशल इश्यूज का सेक्शन देखें पेपर 1 का, तो कम्युनलिज्म है, कास्टिज्म है, वुमेन मूवमेंट है जो हम लोग सिलेबस में कवर करते हैं। तो मेन चीज है सिलेबस बहुत बड़ा है। हमें ये दिमाग लगाना है कि कैसे चीजें मैनेजेबल हो, कैसे डुप्लीकेशन ना हो, कैसे एक ही साथ हम कई चीजों को कवर कर सकते हैं। आप इंटरनेशनल रिलेशंस लीजिए, उसमें चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ टेररिज्म है, उसी का आप इंटरनल सिक्योरिटी से लिंक करिए। डेटा एक ही है, उसको समझना है। हमारे पास टाइम कम है तो हमको वो वेज समझने, वो स्किल समझने हैं कि किस तरीके से टाइम का बेटर यूटिलाइजेशन करें। और ऑफ कोर्स अगर मेंस का पेपर है, बिना हैविंग अ गुड कमांड ओवर योर लैंग्वेज, क्योंकि आप अगर इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे अपनी राइटिंग से तो ऑब्वियसली मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। एंड आई थिंक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेना ही स्मार्टनेस है, बिकॉज it consolidates your knowledge and it's give a very substantial value addition to what you study. Yes, ma'am, आपने ethics की बात की. In fact, political science optional is one optional which is having the maximum overlap. It is useful, as ma'am said, ऐसे में काफी help करता है. It is having overlap in GS paper 1, especially the post-independent India, world history, social issues. GS2, it is having overlap till the degree of 80%. There are some minor overlaps also in Governance, GS3. Ethics, again, if you just leave the non-case studies part, then there's a huge overlap there. And of course, when you're going to appear for the interview, definitely the questions which come is IR se question aayega hi, politics se question aayega, and of course the question will be from economy. So when the questions are coming, and if you have read political science, आप international relation और politics की question बेहतर दे सकते हैं. And of course, after the selection also, political science is going to help you. Ma'am, आपने you talked about the language, that the language of the aspirant should be a mature language. Okay. यहाँ पे एक रोल आता है आंसर राइटिंग का, बिकॉज अल्टीमेटली ये जो 7 पेपर्स हैं जो मेंस में दिए जा रहे हैं, 1750 मार्क्स टोटल होता है. जो पूरा एग्जाम है 2025 मार्क्स का, 2025. Out of that, 1750 is coming from mains, and this is coming from 7 papers. So 86% marks is coming on the basis of answer writing. Now, sometime what happens, the student feel that पढ़ लेते हैं and वहां पे जाके आंसर लिख देंगे, but there are certain nuanced understanding of the answer writing which is required. So I would just like that if you can emphasize that how important answer writing is in pol science and to what degree it is important in general studies. I think answer writing is important across the paper, क्योंकि आंसर राइटिंग स्किल ही है. इफ आई नो समथिंग, इट्स नॉट ओनली आई नो, आई शुड राइट समथिंग that
compels other person not only to read but also to give marks. And I can tell you, reading somebody's manuscript is a very boring task, so you have to take an special effort. Now from this result itself, there are so many students who are coming to me who have not qualified previously, because even if they have joined the test series, they were not writing. They were thinking that they have to read more and more, they have to accumulate more and more knowledge, and whatever knowledge they had, they were unable to write on the paper. This year they followed my strict advice that please write, don't study much, and fortunately they have got a call for interview. तो मैं तो ये कहूंगी कि ये प्रत्यक्ष को प्रमाण वाली स्थिति है। खुद ही ऐसे बच्चे हैं जो इस बात को रियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लिखते हैं तब हमें पहली बार लिखना बहुत मुश्किल होता है, तो लिखना ओवरनाइट नहीं आ सकता है, और अल्टीमेटली अगर हम मेंस क्वालिफाई नहीं कर रहे तो सारे एफर्ट्स वैसे ही वेस्ट जाने वाले हैं। तो उससे ये भी है कि हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, लेकिन हम एप्लीकेशन कर पाते हैं, कितना कर पाते हैं, कितनी ज़रूरत है। बिना You cannot learn swimming without entering into the water. Yes, ma'am. In fact, mains जो stays है wherein the evaluator is not knowing about your profile. He does not know that you are from IIT or something. He is interacting with you just by the quality of the answer that you have written. इंटरव्यू में हो सकता है कि बोर्ड बायस भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर डैप, बट दिस इज अ कंप्लीट टेस्ट ऑफ द मेरिट एंड दिस इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी कल्टिवेटेड एंड दैट्स व्हाई यू हैव अ सेट ऑफ 25 टेस्ट. It's not important that you're starting with a bad answer, but it is important that you finish with good answers. And that's why there's a lot of focus on the crash course also in between prelims and mains. The reason is that the nature of the subject is quite dynamic. So even if you're finishing the syllabus at this point of time, by the time you're going to appear for the mains, there will be a lot of changes, especially in paper 2 or to certain extent paper 1 section B. And also because many students have science background, commerce background, so how to develop the knack of writing, वो उनका एक लिमिटेशन होता है, लेकिन अगर उसको वो फोकस करते हैं तो obviously it really gets transformed into the better marks and the results for which you are here, for which you are working so much day and night. So don't ignore the writing part. Similarly in prelims, don't ignore the practice part, क्योंकि नॉलेज लेने से ही इनफ नहीं है। आप नॉलेज का एप्लीकेशन देखिए कि आप कितना कर पाते हैं, राइट फॉर्म में कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, वो तो प्रैक्टिस करने से ही होगा, बी इट ऑब्जेक्टिव बी इट सब्जेक्टिव. So basically you don't have to wait for the time कि जब knowledge एकदम perfect हो जाए, because that time will never come. You have to start at this point of time and you have to learn throughout the process. Ma'am, we talked about the political science, the optional. लेकिन optional की भी एक limitation है. It can take you, let us say, till 280, 290, till 300. But beyond that, it is the essay and the general studies which is taking you. And we have seen students who have got 300 in political science, but because of the fact that essay did not work for them, they got some 90, 92, or maybe general studies, and in general studies particularly ethics paper did not work out with them, and therefore it becomes important that you also focus on the essay paper, general studies, in general studies particularly on the ethics paper. And that's why ma'am also often talks about that there are 3 papers that you have to actually focus on: essay, ethics, and 2 papers of political science, because clubbing together it is giving you 1000 marks. And essay paper एक ऐसा है ma'am, you must have observed, जहाँ पे एक minimum input से you are getting maximum output. Otherwise you are giving lot of effort in GS1, GS2, GS3, and you are hanging around somewhere 90, 100, 105 tak. But ethics and essay is paying you out. So particularly talking on the essay paper map, you have seen that trend is changing. Essays are becoming more philosophical. Even a student from mathematics background is expected to write such philosophical essay. So what should be the approach for those philosophical essay? Because if it is a technical essay, a content prepare हो सकता है. But when it is a philosophical line, you need to interpret it, you need to reinterpret it. So how to go about that? I have observed this trend that across the papers, UPSC, their questions are becoming conceptual, and they expect that you are in a position. This is true for prelims also now. Yes, conceptual है. Even
अगर आप इस साल के जीएस के भी पेपर्स देखें मेंस के, तो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल हैं, जो आपको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एक्सपेक्ट करते हैं, जो बहुत क्रिटिकल एंड इवैल्यूएटिव थिंकिंग एक्सपेक्ट करते हैं। तो अब जो साइंस या मैथ्स के बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, या जिनको बहुत ज़्यादा रीडिंग और राइटिंग की हैबिट नहीं है, तो सबसे पहली बात, सबसे मिस्टेक जो वो लोग करते हैं, वो टॉपिक को नहीं समझ पाना। तो फिलोसॉफिकल एसेज में सबसे पहले टॉपिक को डीकंस्ट्रक्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ये कैसे आएगी? दिस रिक्वायर ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो इसलिए क्लासेस में जब आप आते हैं, और मैं ऐसे क्लास करती हूँ, तो जब हम ब्रेन स्टॉर्म करते हैं तब जाकर के टॉपिक का एसेंस आता है, क्योंकि फिलॉसफी की मेथड ही ब्रेन स्टॉर्मिंग है। तो पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, नेक्स्ट सिस्टमेटिक थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, डेवलपिंग एन आर्ग्यूमेंट। लोग फिलोसफिकल एसेज में कुछ बहुत मिस्टेक्स करते हैं। उनको लगता है कि हर टॉपिक को मैकेनिकली लिखा जा सकता है। नहीं, हर टॉपिक पे एक अप्रोच नहीं चलेगी कि आप उसका जोग्राफिकल, एनवायरमेंटल, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू लिख दें। Philosophy demands arguments, and you need to develop the clarity of arguments. You need to develop that thinking, and brainstorming is very essential, कि आपके साथ एक प्रैक्टिस की जाए कि हाउ एन टॉपिक टू बी अप्रोच्ड, हाउ टू डेवलप दैट टॉपिक्स, हाउ शुड वी कैन डेवलप। एंड बहुत सारे बच्चे जो अभी क्लासेस में हैं, आई थिंक प्रिटी श्योर कि वो लोग इस बात को रियलाइज कर रहे होंगे कि कैसे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू नीड थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एंड यू नीड समवन हु कैन जस्ट क्रिएट एन एनवायरनमेंट जिसमें आपकी जो थिंकिंग है वो बाहर आ सके। तो फोकस ऑन दीज लाइन्स। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी, चाहे आप 24 में एग्जाम दे रहे हैं, 25 में एग्जाम दे रहे हैं, टाइम इज नॉट इनफ। Time is never enough as far as this exam. And one who understands the value of the time, takes the right action, definitely gets paid in the form of the selections. And those who remain anxious, they remain confused, indecisive, ultimately they lose time, and that automatically ends up in a state of frustration. So ऐसे ना रहे, कंफ्यूज ना रहे, आप मैच्योरिटी के साथ इस एग्जाम को दें, रैशनली चीज़ों को देखें। और अगर ये चीज़ नहीं हो पाएंगी तो मैं बताऊंगी कि मैं कह सकती हूँ कि एग्जाम नहीं हो पाएगा। यू कांट अफोर्ड टू बी नॉट स्मार्ट। Yes, ma'am. And I think what you told about this examination is going to help the students. Those who have qualified the mains definitely start preparing for the interview. We have our interview program running. Those who have not, as ma'am said, decide that whether you want to go for the next attempt or not. And if yes, then start the preparation. For those who are going to appear for the first time in 2025, time is not it is sufficiently it is sufficient at this point of time, but it is not like more than what is required, and therefore you can start the preparation from January itself. Ma'am emphasized on the role of essay, on the role of political science papers, and on the role of answer writing. Hope that helped you a lot. Thank you, ma'am, for the insights. So thank you. Thanks a lot.